thoughts I have cross my mind when I see women around. Think about that. So, काश इस तरह होता जिस तरह आप लोगों ने कहा, तो ऐसे ना होता हमारा मुआशरा जिस तरह है. And at least in universities we should be able to, if not tell the whole truth, tell something which is in the neighborhood of truth. Discrimination hai. Kyun hai? Perhaps it's not the time to go into details about that. For me, as a man, my role model is my daughter. Usually role models umar mein bade hote hain. Mera role model mujhse umar mein chota hai. वो मेरी बेटी है. Because one day she said that when she was walking from the department to the house, there was somebody who made a comment about the kind of clothes that she was wearing, and she stopped and she turned around and said, "Sidhi hue?" And she very proudly told me in the evening when she returned. I gave her a big hug. Cheratani vi vele no achike me paise me workade ab mama pa jib ke paat she no aga me inam work. She's like, good. Next time somebody says something like that, stand up for yourself. Because the space that you give will be occupied. I believe you, I trust you, we have raised you the way we thought we should raise our daughter, the way we should raise our son, and I don't give a damn what people say. Che malur cha sadita jawab ke khabara khadala. And why I did that was because I have always believed, and it is a firm faith that I have, iman hai samala. Will I be alive tomorrow? I don't know. Tasu ke zana khalqa tabkidishi patai, mata pata nishta. So instead of moving around with my daughter and wife as their guardian, Tizabe Bachkom, I would rather educate them, I would rather talk to them, I would rather discuss with them things which they can take care of even when I'm not there. So she is my role model. My daughter is my role model. Because when we go to the village, and we go very often, right from the beginning, because somehow, I don't know, I have not been able to cut my umbilical cord from my village. Num mila prekade ne dekhalan. Zana khalak mun khiyu ya patanish ta badiyu che lag was meresino awal kar da kom che kali na takhtam. Kale ma takhpal kale che kam z paida am kam mor plar ni kada ghi ni kuna paida shida ma ta kam khari. Da khabar da ka bada ma ta patanish ta. Khuzakh pal kili bande fakhar kom skalu bapake nishta, but I still go because that's where I belong. So when we go to the village, and my daughter tells me that when she's going to visit, or my wife too, that they're going to visit Planke Troria, Planke Mama, vagara vagara vagara, and she wears a shuttlecock burqa in the village. Or zakache kili ke dare vaj dastur de. Kho Kali na bahariya chartamunga jwan ko agal take. Not that I told her chata sacha vestana. She doesn't observe a traditional parda. She doesn't. My wife doesn't either. My mother never did. Why? Because I learned this from my grandfather. I learned this from my father. That I can have my kids wear this or that, and they will when I'm around. What will they do when I'm not around?
So I would rather focus on things which gives them the authority, which gives them the freedom, which gives them the strength, which gives them the voice that they can do things on their own. So my daughter is my role model. And I wish that I were as good a human as she is. Because when I was her age, like most men in our society, I also was one of the many. But over a period of time, as I continued to learn, I still am learning and acquire education, I learned how perhaps there were certain things that perhaps I should regret having done and that I should avoid doing in future. Because I personally think that if my education does not change me, I have not acquired education. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तालीम कुछ नहीं बिगाड़ती. शायद मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ. Lekin when I compare my past to my present, not in terms of what I achieved, what I didn't achieve, no. I usually think in terms of how things that previously I did and which now I condemn or perhaps believe that they're wrong, do I feel bad about doing those things? If yes, do I still do them? If yes, मेरी तालीम ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा. तो I don't think I should say कि हमारे मुआशरे में discrimination नहीं है. कौन करते हैं? हम करते हैं. क्यों करते हैं? Variety of reasons. कहीं जमीन प्यारी है, कहीं मर्द होना प्यारा है, कहीं बाप होना प्यारा है, कहीं बेटा होना प्यारा है, कहीं भाई होना प्यारा है. एक चीज जो होना प्यारा नहीं है वो इंसान होना है. And that is one thing which perhaps prevents us from accepting all humans as the same. ये बहाने हैं कि इधर ये कहा गया, वहां ये कहा गया, वहां ये कहा गया. वो जो कुछ है वो है. लेकिन in my day-to-day life, how do I treat my sister, my daughter, my wife, my mother? We respect them. पुख्तनो प मुआशरे के द रिश्तो इज्जत ही, द खज़ो इज्जत नहीं. And we should accept that. Because only after we have accepted our wrong that we can correct it. कोई मतलब हम एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा है जहां पे हम सब कुछ छुपाना चाहते हैं. सर दर्द से पट रहा होगा, तबीयत कैसी? जबरदस्त. सर में दर्द नहीं, बिल्कुल नहीं है. अगर खुश हैं तो तबीयत कैसी है? सच में पतन थिरेगी कम योतन पता डेर. It's like we just somehow, if you're happy, we pretend to be unhappy. If you're unhappy, we pretend to be happy. पता नहीं क्यों हम ऐसा करते हैं. मेहमान आ जाते हैं चाय बस के नजी उस मुश्किल है परुन बेस के लिए रीजन ना यो खपुस के नहीं जी उस उस्ताद है या खुले के मिलाखवन स्टे. And then you ask them again, खैर दे उसके तास च दोनों जोर का है उस बे उसको. No, मतलब the tea that I make for them, आगे एहसान पमा बांधे कहीं चेहरा. Why are we like that? No, serious. Think about that. And perhaps that is what has led to this denial in which most of the times we are. We don't accept our wrongs. कौन गलत है? आप लोग सारे गलत हैं. ठीक कौन है? मैं. I mean, इतनी नरगिसियत, मनफी नरगिसियत. तो क्या ये होना चाहिए? I don't know.
क्या नहीं होना चाहिए ये आप लोगों ने फैसला करना है, क्या होना चाहिए ये भी आपने फैसला करना है. I know what I have to do, which is why, I don't feel bad about my wife sitting in the front seat next to me. आप जो शादीशुदा हैं, क्या आपकी वाइफ आपके साथ फ्रंट सीट में बैठती है? बैठनी चाहिए, नहीं बैठनी चाहिए, वो आपका काम है. मेरी वाइफ बैठेगी तो फ्रंट सीट में बैठेगी मेरे साथ. Even when all four of us are traveling, myself, my wife, my son and my daughter, हम दो बच्चे हैं, हमारे दो बच्चे हैं. No, my son has to sit in the back. My wife sits in the front. एक छोटी सी बात है, लेकिन इसकी अलामती अहमियत बहुत ज्यादा है. Because I'm telling my son, she sits there because she is my wife, and not just because she is his mother. That comes much later. But that, because पहले तो wife होती है, फिर बच्चे आते हैं. तो, but that she is my equal, that she is as good a human as I am. तो कहने का मतलब यह है कि वर्क प्लेस की हम जब बात करते हैं, वो तो लकीली अभी कुछ साल हुए हैं पाकिस्तान में शुरू हुआ है ये रिवाज. उम्मीद है कि ये चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा. लेकिन मैं उससे भी एक स्टेप पीछे जाता हूं कि क्या मैं घर में एज अ सन मैं अपनी मां के साथ किस तरह बात करता हूं. I've seen some sons talk to their mother in a manner where I just wish that they would shut up. क्योंकि एक लड़का है और मां से इसलिए इस तरह बात कर रहा है कि वो लड़का है और वो औरत है. I'm sure you have seen, I have seen. या तो मेरी बदकिस्मती ये सारे गलत काम मैं देखता रहा हूं, आप इतने खुशकिस्मत हैं कि कोई गलत काम नहीं देखा है. उम्र में छोटा भाई बड़ी बहन को ऐसी ऐसी क्या क्या कहता है, क्या करता है. I don't have to go into details about that. फर्क क्या है? और यही मुआशरा इस पे फख्र करता है कि बड़ों की इज्जत करो. तो if I have an elder sister, why do I talk to her in such a disrespectful manner simply because I'm a boy and she's not? तो इन पे सोचना है. एक बात जो मैं शेयर करना चाहता हूं. अब मसलन हम अमूमन अपने मुआशरे से दूर और मुआशरों की बातें करते हैं, वो फिजिकली हमसे दूर होते हैं या क्रोनोलॉजिकली इन टर्म्स ऑफ टाइम हमसे दूर होते हैं. 25,000 साल पहले इस तरह होता था, 25,000 साल को छोड़ो अब क्या हो रहा है, 25,000 मील उधर क्या हो रहा है वो भी छोड़ो, मेरे चम गवर्न में क्या हो रहा है. लेट्स लुक अराउंड, लेट्स नॉट लुक अवे. मैं देख उनके कपड़ों कर रहा हूं, तारीफ अपने कपड़ों की कर रहा हूं, ये कैसे हो सकता है? So I need to look at me. I need to look at things that I have around me. But since that's the tradition, that's the custom, that's the practice, so I'm going to share with you a few things. हमारे मुआशरे में बहुत सारी गलतियां होंगी. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है ना? उसकी पहली खातून प्रेसिडेंट परसों का मतलब ये नहीं, डे बिफोर यस्टरडे, 2007 या 8 में बनी, शायद मैं तारीख या ईयर गलत कर रहा हूं. प्रोफेसर ड्रू गिलपिन फाउस्ट ऑफ हिस्ट्री, शी इज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री. और लॉरेंस समर्स जो यूएस का जैसे हमारा वफाकी वजीर खजाना होता है, इस तरह लॉरेंस समर्स बिल क्लिंटन के प्रेसिडेंसी में वो वफाकी वजीर खजाना था. उसके बाद ड्रू गिलपिन फाउस्ट FAUST, अगर आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा. 11 साल वो प्रेसिडेंट रही और उसकी प्रेसिडेंसी के दौरान हमारी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होते हैं, वहां पे यूनिवर्सिटीज में प्रेसिडेंट्स होते हैं. और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तारीख 2000 नहीं
250 साल के करीब है। तो 250 साल में उस यूनिवर्सिटी में पहली खातून तकरीबन परसों बनी। 2018 में उनका टर्म खत्म हुआ, 11 साल वो रही। यस, 2007 में 2007 बनेगा ना, हाँ 2007 में। So 2007 she became the president. For 11 years she is the president of Harvard University. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है एक ऐसे मुआशरे के लिए जिसका नाम अमूमन सब लोग इस गरज से लेते हैं कि they are a standard in a way। एक यूज की और मिसाल देता हूँ। When I went abroad for higher studies, the incident that shocked me कि ये जो बड़ी बस नहीं होती है जो 52 सीटर है, आई थिंक हमारे यूनिवर्सिटी के भी क्लासेस भी शुरू नहीं हुई थी, ओरिएंटेशन चल रही थी। वो उन लोगों के नखरे बड़े होते हैं, हम तो आसान होता है ना, आज दाखला कल क्लास में, और स्टूडेंट को पता भी होना चाहिए कि उसकी क्लास किधर है, और अगर उसको पता नहीं है तो 1 लाख भी मारो। वो ओरिएंटेशन करते हैं कि जी बैंक इधर है, क्लासरूम उधर है, तो डिपार्टमेंट फलाना उधर है, लाइब्रेरी उधर है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम साइंस भी नहीं लगाते हैं और ओरिएंटेशन भी नहीं करते हैं। ये हमारे पाकिस्तान का एक कल्चर है। तो यू नो, सो तीसरा दिन था या चौथा दिन था, एंड वी आर डन विद द डे लॉन्ग ओरिएंटेशन, और थके हुए थे। आई एंड देयर वाज अनदर पर्सन, वी वर वॉकिंग टू द बाजार। No, there was a bus stop next to a bank. So I saw a girl who was almost the same age as my youngest sister, who at that time was a student of 3rd year or 4th year. और वो 52 सीटर बस को वो मेरे बहन के उम्र की एक छोटी लड़की चला रही थी। I literally, when I saw, it's like, अगर बंदा वो निद्रेगी ने फला रखे, यस चिता से चल रहे, मतलब खजा और बस में चली ददी मखरुक्षा, यू नो दैट काइंड। सो सीरियस कोर के ना पा रहा, यू नो दैट काइंड। सो आई वाज एंड आई एम ट्राइंग टू, यू नो, figure out that the steering bus sangata is a kabustunu wala khoder wala mata ho aga waqt pata na jara da ho power transmission de o daga de power steering de automatic transmission wagara wagara wagara, but there was a young girl, and then there were many more that I encountered and I saw, and then when I moved out, jo 10 दिन या 11 दिन वो ओरिएंटेशन था, जब वो ख़त्म हुआ और उस फ्लैट में चला गया जहाँ मैं रहता था, तो दूसरा शॉक जो मिल रहा है, अब एक वो खातून है, तो उसके वेस्ट के अराउंड एक बेल्ट है, हर वो औजार, एवरी टूल दैट अ ब्लैकस्मिथ, अ प्लम्बर और एन इलेक्ट्रिशियन यूजेस, वो उससे लटक रहा है। हथौड़ा है, पेचकस है, प्लास है, बाकी के नाम मुझे नहीं थे, सब कुछ लटक रहा है। एंड व्हेन शी वॉक्स शड़ंग शड़ंगम कई मुंह बाजार पे आवाज करे दा शड़ंगा बंद कर जक टिकना दा का ना गोनाई की। सो आई गो टू दैट, यू नो, प्लेस, और कम दा गदे लेटर दे ची माता दा फ्लैट अलॉट शवे दे दास्ते दास्ते, और हर दरवाजे बंद लिखले ची सीधी अपार्टमेंट मैनेजर, apartment complex manager सोखते मा खो मागा जनान लीदले वा लुपाटेम नवा चुले नो, मतलब तपोस में वो चारत हुचागा दे ज़ोर अकलमा, it was दा बाय मुंग बिजली ठीक कही खजा कना, you know, दा बा अगर बचली की अब हम दा ठीक कही, दाबम कही, and now not only that, ज़ख़ो मतलब तास को ब्याम है देर एडवांस्ड वक्त के जवान थे रहा है, ज़ख़ो दा डिस्ट्रिक्ट करक के दासे इलाके ने मिसाल तस्कलू बम निश्ता उसम निश्ता 21st century के बावजूद दे च जोड़ पाकिस्तान हम वक्त तेर शनिवी पाकिस्तान में हज़र लस्कलू बनिश्ता। So for me it was very shocking। चेहरा लगा हाँ
زه سړی مطلب د پیچکس راکولی نشم کولی کچل نه هم راځي we pretend to fix the thing. So what I'm saying is if we think چې موږ معاشره کې مسلې ډېرې دي نورو چېرته نشته نو US کې as I said Harvard یونیورسټۍ کې وړومبی women president was a few years back. So why couldn't they have it? In fact, MIT record هغه هم غالبا یا خو if I remember correctly اوسه پورې they haven't had a woman president. The university from which I graduated هغه خو راته پته ده they've never had a woman president. So when it comes to workplaces, when it comes to giving positions of power, or when it comes to giving important policy making statuses to women, almost every country has problems. Should they do those things? No. Do they do those things? Yes. Do we want all this to stop? Yes. Can we help? Absolutely. How do we help? Do we stop others? No. You can start at home. You can start at home. And I should ask myself this question and ask my parents. چې امانی کبا خپل لونو ته پزمکو کې حصہ ورکړي ز خپل لور ته یا خپل خور ته زمکو کې حصہ ورکولو ته تیارم دا نور خبره خو ډېرې غټې دي او زه به هم درته یو څو احادیث ووایم آیتونه به هم درته ووایم اطلب العلم فریدة على كل مسلم ومسلمة دا صحیح حدیث دی صحاح سته کې کوټ شوی دی یهود هنود براغله موږ جنکو سکولونه به په بمونو کې والوزول څوک به و هغه did it not happen here دا صحیح دی حکم دی درته اطلب العلم فریدة على كل مسلم ومسلمة څوک ډزي موږ چې په یونیورسيټي کې فیمیل سټوډنټ ته یا فیمیل ټیچر ته لایف ګرانو زه خو دونه په هغه نه پوهېږم په هغه باندې کیسو باندې خو ما خپل دا خیال دی چې یو خاص حد پورې I also show less respect to some of these principles of our belief system. So هغه خلک چې څه کوي چې موږ نه لرې دي 25,000 کیلومتره لرې دي یا 15,000 کیلومتره لرې دي یا 25,000 کاله لرې دي یا 15,000 کاله لرې دي فاین زه ورته څه کوو او څه کولو ته تیار یو Are we willing to change or is life going to go the way it has been going? If we say it's like fine to the وسط تیره شوی ده د باقي به هم تیره شي پرون پین لګو نن زیات راتلونکي سبا کې به دې نه هم زیات پین وي ولې because life brings more and more challenges. What was a luxury yesterday is a need today. And what is a luxury today is bound to be a need tomorrow. So 112 million women in Pakistan, that's 49% of the total population. Look at it this way. Do you want to say no to them and not make them part of the life that we have around us? We like it or we don't. They're there. They're there. So I don't have any نصیحت خود فضول شوی خبره ولی او خیار ته ضرورت نہیں بیوقوف پہ عمل نہ کی So I have requests that I make and think about them. Do you want your life to continue the way it is or do you want it to be better? Whatever you want, make your decisions. Make your choices and stick to them. Sida Sawai, conventional
on elimination of discrimination against women. Kor ke che za khor me school tazi ya college tazi university tazi za pe khafam ka pe khoshala. Simple dona khabara da mara kanun se chi chog jodi yal tabe jodi. Am I happy when she goes? Do I facilitate her or do I prevent her? If I prevent her, there will be discrimination, there will be workplace harassment, there will be all kind of harassment. Should it continue? I don't know. Should it stop? You choose. Thank you very much. Have a lovely day. Bye-bye.